वेलकम टू फिजिक्स क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे पास करती है तो देन इट चेंजेस इट्स पाथ। उसके पाथ में, ओरिजिनल पाथ में चेंज हो जाता है, डेविएशन हो जाता है। तो दिस टोटल फिनोमिना इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब कि चेंज इन path of the light. Suppose this is medium 1, rarer medium, and this is denser medium, medium 2. And if light passes from this medium to this medium obliquely, that is making certain angle with the normal, then it deviates from its path. वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाता है, अपने पाथ को चेंज कर देता है। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिमिलरली इफ इट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अगेन इट विल चेंज इट्स पाथ एंड इन दैट केस इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रेयर टू डेंसर जब पास करता है तो नॉर्मल तरफ बेंड करता है डेंसर मीडियम में, और डेंसर से रेयर मीडियम में जब जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा। क्यों ऐसा होता है, दैट वी विल डिस्कस इन द कमिंग टॉपिक। ओके, सो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट दैट पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस, दिस इज इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, फर्स्ट मीडियम एंड सेकेंड मीडियम। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस at the point of contact are in same plane. Okay, incident ray, refracted ray and normal to the interface at the point of contact are in same plane, this and this, and this ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is a constant for given pair of media. This is the second law, and that is also known as the Snell's law, law of reflection. Sine of angle of incidence and sine of angle of refraction, this ratio for a given pair of media is constant, and that constant is known as the refractive index of that media. Refractive index of medium 2, as in this case, with respect to first medium. Light is passing from first to second medium, so that constant is known as the refractive index of first medium with respect to refractive index of second medium with respect to first medium, and that is denoted as 1 mu 2 or 1 n2. Sometimes it is represented by mu or sometimes it is represented by n. So this is the law of refraction. Okay, अब नाउ व्हाट इज दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू मीडियम, एंड टू मीडियम दैट इज
For any media, mu, refractive index mu is equal to, the basic definition is C by V. Velocity of light in vacuum to velocity of light in that medium. This ratio is known as the refractive index of that medium. This is velocity of light in vacuum. Light in vacuum to velocity of light in that medium in which the light is passing. Light in medium. So this is the refractive index of a particular medium. Because C, the velocity of light in vacuum is maximum with respect to any media. So that ratio is known as the refractive index of that medium. Okay? So now in this particular case, if say light ray is passing from medium 1 to medium 2, rarer to denser medium, then how this refractive index is written? Mu is equal to, by Snell's law. So by Snell's law of refraction that we have seen, that this, if light ray is passing from medium 1 to medium 2, then it is written as the 1 mu 2. That is refractive index of second medium with respect to first. Refractive index of medium 2, second medium, with respect to first medium, and it is mu 2 by mu 1. So 1 mu 2, as in this case, if light ray is passing from medium 1 to medium 2, then it is mu 2 by 1, mu 1, refractive index of second medium with respect to first medium. Alright? And by the definition of refractive index की जो definition है वो क्या है? C by V. तो C by V2 upon C by V1, and then this will be equal to V1 by V2. Okay? So 1 mu 2, that is equal to V1 by V2. Velocity of light in first medium to velocity of light in second medium. This ratio is the refractive index of second medium with respect to first medium. Okay? Now, by Snell's law, you have seen the law of refraction. The ratio of sine of angle of incidence to ratio of the sine of angle of refraction, that is the refractive index of this second medium with respect to first medium. So by Snell's law, 1 mu 2, which is sin I by sin R, and this 1 mu 2, from here you are getting V1 by V2 is equal to sin I by sin R. Alright? Snell's law of refraction, light rays passing from first to second medium, 1 to 2, then it is 1 mu 2, refractive index of second medium with respect to first medium, and it is sin I by sin R. From here you are getting 1 mu 2 की वैल्यू कितनी आ गई? V1 by V2, velocity of light in first medium to velocity of light in second medium, that ratio, and that is sin I by sin R. Now, if second medium, as in this case, if second medium is denser medium, okay, then what will happen? अब अगर ये सेकेंड मीडियम डेंसर मीडियम है तो नेचुरली इस डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा? रिड्यूस कर जाएगा. सो एज इन दिस केस V2 is less than V1,
इसका मतलब क्या हो गया, साइन आर is less than sin I, it means R is less than I. And this is the reason, यही reason है जो हम कहते हैं कि when light ray passes from rarer to denser medium, it bends toward the normal because value of R is less than the value of I. क्यों? Because velocity of light in second medium is less than the velocity of light in first medium. Similarly, if it passes from denser to rarer medium, in that case, the velocity of light will be more, so R is more, then it goes away from the normal. Like in this case, if light ray is passing from denser to rarer, then it will go away from the normal. At that point, this is I and this is R. Incident ray and refracted ray. Alright? So this is the basic concept of refraction of light. Alright? Okay. Now, when light, this refraction of light say takes place in this particular case, now we have condition of reversibility. Reversibility condition क्या है? Condition of reversibility. Reversibility condition, like in this case, suppose the light ray is passing from first medium to second medium, rarer to denser, and in this medium, second medium, say a reflecting surface is placed just normal to the refracted ray. अगर यहाँ पर कोई हम एक reflecting surface रख दें, like plane mirror, then what will happen? So this I, angle of incidence, angle of refraction. So when this ray is incident normally here at the plane mirror, reflecting surface, then it will retrace its path after reflection. Reflection के बाद क्या होगा? That ray will retrace its path. That we have seen in case of reflection. Now, for incident ray, the ray that passes from medium 1 to medium 2, what will you write? That 1 mu 2, that is sin I by sin R, and for reflected ray, the ray that is reflected from plane mirror, it means that ray is passing from second to first medium. Then what will you write? 2 mu 1 is equal to sin R upon sin I. Now, if you multiply these two equations, then what will you get? So this implies 1 mu 2 into 2 mu 1, that is equal to 1. Sin I by sin R into sin R upon sin I. So that is cancelled, it means this product is 1. So from here you will get 1 mu 2 is equal to 1 upon 2 mu 1. That is why this is condition is the condition of reversibility, both are reversible to each other. Alright? What we are getting, हमें क्या मिल रहा है कि if light ray passes from first to second medium and in second medium जो reflected ray है, just उसके normal हमने एक reflecting surface like plane mirror रख दिया. Then what will happen after reflection? That ray will retrace its path. So for the ray that
passes from first to second medium, जो फर्स्ट से सेकेंड में आ रहा है, by law of refraction 1 mu 2 sin I by sin R, and for the reflected ray, reflected मतलब after reflection from the plane mirror 2 mu 1, because it is passing from second to first, sin R upon sin I, and if you multiply these two you will get this relation. So this condition is the condition of reversibility. All right? Okay. Now we will see what is the relation between the angle of incidence and angle of emergence. If light ray is passing like this, angle of incidence and angle of emergence. Now suppose we have second medium as glass, a denser medium, glass. First medium say air, and rays, light rays passing from air to glass. Rarer to denser, it will bend toward the normal. Again at this point it is passing from glass to air, so again we have to draw normal here. So this angle of incidence I, angle of refraction R, then this is also R because alternate angle, and this is angle of emergence. Okay, so air, glass, again it is light ray is in air. Okay, air to glass, rarer to denser, it will bend towards the normal. This is our alternate angle, and this is angle of emergency. Now how I is related with E? Okay, so by Snell's law what will you get? It passes from first air to glass, तो आपको क्या मिलेगा? A mu G, that is sin I by sin R. Question 1. Then from glass to air, and glass to air, G mu A, and for this surface glass to air you have angle of incidence R, angle of refraction, that is emergence E, sin R upon sin D. Okay, air to glass A mu G sin I by sin R, glass to air G mu A sin R upon sin D. And if you multiply these two equations, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? And that you will get sin I upon sin E. And this, by condition of reversibility, this product is 1. It means I is equal to E. So So 1 is equal to sin I upon sin E. This implies I is equal to. So angle of incidence equal to angle of emergence if ultimately light is emerging in the same medium. Air to glass, then glass to air. Alright? Okay. अब हमें देखेंगे अगर हम 2 से 3 मीडियम एक साथ कंसीडर करते हैं,
if light ray is passing say from air to water, water to glass like this, फिर उनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में क्या रिलेशन होगा. ओके, तो रिफ्रैक्शन थ्रू more than two medium. Okay, then suppose we have this first medium, air, then say glass, and then water. All right, we have said we have taken three media at a particular time: air, glass, and water. All right, so air to glass is normal, rarer to denser. Again, then from glass to water. And glass to water, so water is rarer than glass, so it will move away from normal, and then again from water to air, so it is this. So, angle of incidence, angle of refraction, this is R, alternate angle, and this angle say R1 in water, because that angle will be more than R. Water is rarer as compared to glass. And this is R1, and this angle of emergence, again it is air, so E is equal to I, that we have proved. Okay. So for air to glass, by Snell's law, what will you write? A mu G कितना हो जाएगा? Sin I by sin R. From glass to water. तो glass to water में क्या हो गया? G mu W, that is sin R upon sin R1. This is equation 2. And again from water to air. So W mu A, and that will be sine of R1 to sine of A. This equation 3. Now, अब इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें, then what will you get? A mu G, G mu W into W mu A, and that will be equal to 1. Again, because I is equal to E. So, sin I is cancelled by sin E, sin R is cancelled by sin R, sin R1 and sin R1. All are cancelled. So ultimately we have this relation. तो इस तरह से अगर कई मीडियम के थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा. फर्स्ट टू सेकेंड, then second to third, and again third to first medium, same medium. All right. So that is the relation. Okay. अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डेंसर मीडियम में है तो उसकी जो रियल डेप्थ है उससे ऊपर दिखता है वो.
apparent depth, जो उसकी डेप्थ अपीयर होती है, apparent depth, that is less than the real depth, and it is because of what? Refraction of light. For example, अगर आप वाटर में, पानी में के बॉटम पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो अपने लेवल से ऊपर दिखता था, अगर आप उसको ऑब्जर्व करें तो यह क्या होता है? ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। कैसे? Suppose this denser medium, water, okay, and this rarer medium, air. Water, air. अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, at this position, and it is absorbed from outside. Okay, यहां से आप इसको एयर से ऑब्जर्व कर रहे हो, कैसे दिखेगा आपको? The ray that passes along the normal, it will go straight. और जो रे किसी एक एंगल पर आएगा, it will go away from the normal. देख रहे? So this angle of incidence and this angle of refraction, और अगर इस रे को हम प्रोड्यूस करें तो ये यहां लगता है, यहां कहीं से आ रहा है. इट सीम्स टू कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. एनी ऑब्जेक्ट इज हियर इन डेंसर मीडियम से वाटर, एंड इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड. आउटसाइड से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जो रे अलोंग द नॉर्मल आएगा, that will go straight, or the ray which is at certain angle I with the normal angle of incidence, denser to rarer medium, refracted ray will go away from the normal. और अगर इसे प्रोड्यूस करा, if it is produced then it will meet here. So this object appears here. ये ऑब्जेक्ट लगता है यहाँ कहीं है. ओके, तो ये जो डेप्थ है, दिस इज द रियल डेप्थ. ये क्या हो गया? रियल डेप्थ. एंड दिस इज द एपरेंट डेप्थ, जहां वो अपीयर हो रहा है, दैट इज एपरेंट डेप्थ. ओके, तो अगर हम इसे कुछ एम एन OP, तो अब आप देखो, अगर दिस एंगल है आई, देन दिस इज ऑल्सो आई अल्टरनेट एंगल. दिस इज आर, देन दिस इज ऑल्सो आर. ऑलराइट. तो ये जो ओरिजिनल पोजीशन ऑब्जेक्ट का है एट दिस पॉइंट O, और ये अपीयर कहां हो रहा है? हियर. तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज द नॉर्मल शिफ्ट, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टू दिस पॉइंट ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन की वजह से लगता है कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां शिफ्ट हो गया है, और ये इसकी अपरेंट डेप्थ है और ये इसकी रियल डेप्थ है. सो दिस डिस्टेंस आई नो दैट इज नोन एज द नॉर्मल शिफ्ट. अब आप अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अप्लाई करो, तो रे इज पासिंग फ्रॉम वाटर टू एयर. वाटर टू एयर जा रहा है, क्या लिखेंगे? WμA, वाटर टू एयर. दैट इज sin I by sin R. Therefore, A mu W क्या हो जाएगा? Because effective index of any medium is with respect to water or vacuum. क्यों? Because velocity of light in water and vacuum, in air and vacuum is almost same. So A mu W, refractive index of water with respect to air, that will be sin R upon sin I by reversibility condition.
अब आप देखो कि दिस ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो आप इसे, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट, इसका मतलब क्या हो गया कि दिस रे ओपी, ये जो रे रिफ्रैक्ट हो रहा है, दिस आल्सो मस्ट एंटर इन द पुपिल ऑफ आई। ये भी रे अगर यहां पे एंटर करेगा तभी तो आपको दिखेगा ना। इसका मतलब क्या होगा कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल एंगल। ये पॉइंट पी कहां पर है, वो बिल्कुल इसके क्लोज में है एम के, तभी ये रे रिफ्रैक्ट होके आपको दिखेगी। क्लियर? ये रिफ्लेक्टेड रे अगर ये आईज में इंटर करेगा तभी तो आपको दिखेगी ना। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल एंगल्स। तो ये जो पॉइंट पी है वो कहां पर होगा, वेरी क्लोज टू पॉइंट एम। सो इन दैट पोजिशन दिस डिस्टेंस PO will be equal to OM and PN will be equal to MN। तो अब आप देखो साइन आर कितना है यहां से, साइन आर इज इक्वल टू PM अपॉन PN परपेंडिकुलर दिस, और साइन आई कितना हो गया, PM अपॉन PO। That is equal to PO upon PN, और PO this is approximately equal to how much। अगर ये पॉइंट बिल्कुल M के क्लोज में है तो यहाँ पर PO की वैल्यू कितनी होगी, MO। तो दैट इज MO अपॉन, और PN कितना हो जाएगा, MN। Alright, this P is very close to M, otherwise ये रे आपको दिखेगा नहीं। Okay, so I and R are very small angles in actual practice, so we are getting this result। MO क्या है, रियल डेप्थ, और MN क्या है, एपरेंट डेप्थ। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर MUW, that is real depth upon apparent depth। Okay, so this result we are getting, so MUW in this case, that is real depth upon apparent depth। Okay, अब नाउ दिस नॉर्मल शिफ्ट, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना शिफ्ट कर रहा है नॉर्मल पोजीशन में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो दिस नॉर्मल शिफ्ट विल बी इक्वल टू द रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। So that normal shift, it is real depth minus apparent depth. So normal shift x is equal to real depth माइनस एपरेंट डेप्थ। तो अगर आप इस रियल डेप्थ, देन दिस विल 1 माइनस एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। ओके, अगर रियल डेप्थ कॉमन ले लें तो 1 माइनस एपरेंट अपॉन रियल, एंड दिस इज रियल डेप्थ देन, एंड दिस विल बी apparent upon real, that is from this is 1 by mu, तो 1 upon A mu W।
So this is the value of normal shift. In general, for any medium, tensor medium, tensor to any other medium, x is equal to क्या आ जाएगा? In general, x is equal to apparent this normal shift, that is real depth 1 minus 1 by mu refractive index of that medium. Okay? Because in place of water, any tensor medium will be there. It may be glass, it may be oil or something like that. तो ये रिलेशन हमें मिलता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल. नाउ लेट्स सी अ प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. सपोज वी हैव दिस ग्लास of this thickness, say x, which is 6 centimeter, and below this glass some object is there, or suppose this is placed on a paper, and on the paper there is a this spot on the paper. Okay, मान लीजिए पेपर के ऊपर स्पॉट है, this black spot, and above the spot this glass is kept, and refractive index of glass is a mu g, that is 1.5. तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ये स्पॉट है, प्रिंट है, वो कितने अबव दिखेगा, कितनी इसकी नॉर्मल शिफ्टिंग होगी. तो नॉर्मल शिफ्ट कितना हो गया? नॉर्मल शिफ्ट अपने पोजीशन से कितना नॉर्मली ये शिफ्ट करेगा. तो नॉर्मल शिफ्ट हमने क्या देखा, ये इक्वल टू रियल डेप्थ वन माइनस 1 बाई म्यू. तो रियल डेप्थ यहां कितनी है? 6. 1 माइनस 1 अपॉन 1.5, that is 6 into 1.5 minus 1 upon 1.5, and that will be equal to 6 into 0.5 upon 1.5, that is 6 by 3, so it is 2 centimeter. तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से यहां पर दिखेगा, विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. तो ये इसकी नॉर्मल, ये जो ऑब्जेक्ट मीन्स दैट स्पॉट दैट विल अपीयर हियर. ओके, क्लियर? ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ if you are satisfied with the content of the matter, please like, share and subscribe it. All right, thank you.